And Dr. Saab is PhD from UK. No, from US. And he has worked in US, UK, Canada, and Pakistan. He has been a clinical psychologist and educationist. He is former Vice Chancellor of the University of Peshawar, Rector Foundation University, Director Center for Higher Education Transformation, and recipient of prestigious Fulbright New Century Scholar Award. Today, we will be hearing Dr. Saab on emotional intelligence. Over to you, Dr. Saab. Assalamu alaikum, everyone, again, ji. So I will be flipping back and forth between Urdu and English. I hope it's not a problem. इसलिए कि वो कई बातें ऐसी हैं, लेकिन perforce because of certain technical terms I will be primarily using English, लेकिन बीच में उर्दू में भी मैं बात करूँगा. मेहरबानी. ऐसा है कि I have been in many gatherings like this, और उसमें दो मसले जो बुनियादी पहले मैं सामने रख दूँ. एक तो ये है कि most of you feel obligated to sit through this and you have to suffer what I have to say. तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ठीक है, ये it's a requirement of yours, you have to listen to certain people, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे situation में, and this is linked to emotional intelligence, I'll come to it in a second. ऐसी situation में होता ये है कि जब आदमी को ये feel हो रहा हो ना कि ये तो मेरी मजबूरी है, तो वो दिमाग कहीं फिर it stops functioning very well. और अगर बगैर मजबूरी के आदमी किसी चीज़ को सुन रहा हो या पढ़ रहा हो या तो then your abilities to understand it and get interested get greatly improved, है ना. तो पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि I know it is an obligation that you have listened to me, लेकिन try to come into the frame of mind where just push away the obligation part and try to just listen to what I am saying. Not because you are obligated to listen to it, but because you may find some of it interesting. I'm not guaranteeing that जो मैं सब कुछ कहूँगा वो आपके लिए interesting होगा या useful होगा. एक. दूसरी बात ये है कि of course you're all very senior people, experienced people. There are probably things you know about emotional intelligence which are more than what I know. लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ किसी भी वक्त किसी any one of you feels that you don't understand what I'm actually saying, है? Or there are questions which are coming into your mind, so please just feel free to intervene, है ना. उस वक्त फिर आप बात कर लिया करें. तीसरी बात यह है कि ये असल में मैं तो सारी उम्र ये काम करता रहा हूँ और एक तो है in a sense sort of your how should I say it, sort of the technical academic learning which takes place, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा important होता है a learning at a more deeper level, which okay, I'll not complicate it any further. Simply ये मेरा point ये है कि hopefully आप जब यहाँ से उठें 3 घंटे बाद, it's a fairly longish time. It's long, but it's not long enough for the kind of topic which I'm dealing with. तो
मैं सोच रहा था कि क्या टेक अवेज हो सकती हैं पॉसिबल कि आप जब यहाँ से जाएं, एक तो आपने आई डोंट नो व्हाट एवर यू हैव टू डू टू डेमोन्स्ट्रेट योर कॉम्पिटेंस इन दिस टॉपिक, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पर्सनल टेक अवेज क्या हो सकते हैं, what could be the takeaways which you can have. तो एक तो वो चीज़ है जो I mean I'm a psychologist by profession in a sense, मैं पढ़ाता रहा हूँ लेकिन हूँ तो मैं psychologist. तो अगर ये मैं, हालांकि 3 घंटे तो इतना टाइम नहीं है, if I can somehow motivate you to try to develop the habit of self-reflection, है? ये 100% नहीं चला सकता आदमी, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मली टाइम नहीं होता, लेकिन if you develop the habit of mind, है ना, or you start on the process of developing the habit of mind of self-reflection, तो I think it will be a very great takeaway. अगर ये एक फर्द में भी पैदा हो जाए तो I think it will be a big issue. तो एक तो ये है सेल्फ रिफ्लेक्शन का. दूसरा है which is tied to self-reflection is the issue of questioning. Not questioning others, questioning yourself. Questioning yourself. अगर ये टेक अवे हो जाए थोड़ा सा कि जी आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं या सोच रही हैं with respect to तो उसको कभी कभार क्वेश्चन करना. सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में जो टेक अवे हो सकता है, now again I'm speaking as a psychologist, is the fact which most of us are not really cognizant of, the fact that our thinking, our behavior and our emotions are very, very tightly interlinked. अच्छा, होता ये है, हमारा ख्याल होता है कि हम जो फैसले कर रहे हैं, हम जो कानून पढ़ रहे हैं, है ना, हम जो वकीलों की दलीलें सुन रहे हैं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, तो we feel and we believe, and it's not a dishonesty or anything, that's actually how human beings are, all of us are like that. हमें लगता है ऐसा है कि ये तो मैं तो बड़ा रैशनल इंसान हूँ, मैं तो बड़ा लॉजिकल हूँ, हैं, और मैं तो सिर्फ दलीलों पे जा रहा हूँ. As a student of human being, I know that if I've had a fight with my wife before going to court, the way I will hear those dalil will be covered by the anger which I am brought into the acha. But I remain unaware that feelings which I have brought to my, what do you call it, bench? या क्या कहते हैं, जज की कुर्सी पे जब आप बैठे होते हैं या बैठी होती हैं, तो आप एक मशीन तो नहीं है ना, आप you are a thinking being, you are logical, you are rational, all of that is true, but you are not a machine, है ना. So it is inevitable कि in whatever I am doing, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ, ज़ाहिर है there is this whole thought process which is going on, which I am expressing in a certain language. लेकिन I know that it is a fact that मेरी emotional condition जो है वो उसको color कर रही है. अच्छा, लेकिन उसकी awareness मुझे नहीं है, और उसकी awareness होने भी, मतलब awareness
इस हद तक है कि I know that for a fact, but that is because I'm a practicing psychologist. लेकिन मैं आपसे टेक अवे की मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर ये रियलाइजेशन भी हो जाए और मे बी 2-4 मिनट के लिए रहे, but even if it's for longer, that behavior, thinking and emotions are tightly interlinked. And I believe that there is a hierarchy of importance, hierarchy of power of these three things. Behavior है, thinking है और emotions है. ठीक है? The most powerful is the emotional stuff. यानी बिहेवियर भी आपकी थिंकिंग को भी इफेक्ट करता है, आपकी इमोशंस को भी इफेक्ट करता है. थिंकिंग आपके बिहेवियर को भी इफेक्ट करती है, आपकी इमोशंस को भी इफेक्ट करती है. इमोशंस आपकी थिंकिंग को भी इफेक्ट करती है, आपके बिहेवियर को भी इफेक्ट करती है. सबसे पावरफुल जो इनमें तीन, ये अगर इन तीन को हम डिवाइड कर दें, सबसे पावरफुल जो है दैट इज द इमोशनल एंड. एंड सबसे निग्लेक्टेड जो है वो इमोशनल एंड है. Because we really do, it is difficult for the ordinary individual to recognize कि यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा, मैं तो इतना पढ़ी लिखी औरत हूँ, मैं तो इतनी लॉजिकल हूँ, मैं तो इतनी होशियार हूँ, तो ये मेरी फीलिंग्स कि ये क्या बात है, ये तो this doesn't matter. But in reality the feelings are there, and I will not go any further, belabor this point any further, लेकिन मैं इस context को ज़रा define करना चाहता था कि ये emotional intelligence का topic जो मैं, which will go into a focused in, कि इसका real context क्या है, कि why. तो बुनियादी बात ये है कि emotions जो हैं, many times they are blinding us to the facts. Huh? But we are blind to our blindness. है ना? Hopefully what one takeaway which you can have is that you start being able to recognize that there could be blindness, and you start being able to recognize कि इस वक्त जो मैं सोच रही हूँ या मैं जो जिस तरफ जा रही हूँ उसमें शायद मेरी इमोशंस का भी कोई अमल दखल हो. तो then you can do, उसके फिर practical implications क्या आते हैं उसकी दूसरी. तो अगर ये 2-3 takeaways, hopefully, of course I can keep on hoping, ये मतलब नहीं है, वो सिर्फ आप कर सकते हैं. By the way, I can't dictate or I can't force anyone to take away anything from here. Only you can take away something, and you may take away nothing at the end of it, or you may take away something else, or one of these two things. लेकिन मेरे ज़हन में जो takeaways आए, ठीक है जी, okay. वो क्या अलाप था ना, ये तो this was just the context. Intelligence है. मैं जब सोच रहा था कि इंटेलिजेंस क्या है तो मेरे जहन में पहला ख्याल है ISI. Anyway, I'm sure all of you have some meaning of the word in your mind. Eh? So anyone want to share with everyone else कि आपके ख्याल में इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? Wisdom. अच्छा ठीक है. Anyone else? जी. Okay. चलें जी, I'll not make it into a schoolroom. Traditionally, intelligence को जैसे देखा गया है ना, intelligence is usually equated to, आपने जो बताया understanding, मैं आपके definition की तरफ बाद में जाऊँगा. Understanding. It is considered an intellectual
स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, है ना, कि आप चीज़ों को, एकेडमिक चीज़ों को समझते अच्छे हैं, आप लॉजिकल हैं, आप रैशनल हैं, ऐसी चीज़ों को नॉर्मली इंटेलिजेंस कहा जाता है। साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस हैज़ बीन किकिंग अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ट्रेडिशनली पहले जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हुई तो इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट आर कॉल्ड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है ना। इंटेलिजेंस वाज इक्वेटेड टू your ability to think, your memory abilities, your problem solving abilities, stuff like that, ठीक है। और उसकी मेजरमेंट का जो बहुत लोग इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, there is an intelligence quotient as they call it, which is a वो fraction की उसमें कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन so ये Wechsler is a name whose name will keep on appearing, W-E-S-C-H-L-E-R, Wechsler. Oh, I may have the spelling wrong, but anyway, Wechsler ने IQ टेस्ट का तो सुना होगा सबने। वेक्सलर ने IQ टेस्ट डेवलप किया जिसके कुछ वर्बल हिस्से हैं और कुछ नॉन वर्बल हिस्से हैं, लेकिन दे आर ऑल फोकस्ड ऑन मेजरिंग द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। मतलब इंटेलिजेंस वाज डिफाइंड ट्रेडिशनली एज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन और गोल्ड मेडल लेता था या लेती थी और जो IQ टेस्ट पे बड़े बड़े स्कोर करते थे, उनको लोग अमूमन इंटेलिजेंट कहते हैं कि ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है जी, ये हमेशा फर्स्ट आता है, ये तो हमेशा जी फर्स्ट आती है, ठीक है। एंड दैट इज द कॉमन बिलीफ इवन नाउ। That's what intelligence is equated to. Abstract rationality was considered the big indicator of intelligence. लेकिन ये लोग जो है ना, ये हर चीज को क्वेश्चन करते रहते हैं। लोगों ने रियलाइज किया कि यार ये और किस्म की इंटेलिजेंस भी है। हमें एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉग्निटिव रैशनल चीजें हैं ना, जिससे आदमी नंबर बहुत सारे लेता है, जिससे आदमी, बट रिसर्चर्स सून रियलाइज दैट देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल वेक्सलर, आई विल करेक्ट माय स्पेलिंग, Wechsler is W-E-C-H-S-L-E-R. So Wechsler himself said that there are two kinds of intelligences, at least. One he called intellective, which is what I've been talking about, and the other one he called non-intellective. और non-intellective intelligence क्या है? Non-intellective aspects of intelligence that includes emotional, personal and social factors. Acha, now I'll bring it back to real life. मुझे इससे याद आया, टॉलस्टॉय का नाम किसी ने सुना हुआ है? और टॉलस्टॉय की एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत ही ज़ख़ीम किस्म, उसका नाम है वॉर एंड पीस। तो उसमें वो एक फौजी की डिस्क्रिप्शन करता है, हु इज अ वेरी हीरोइक यंग मैन, है ना, वो बहुत लड़ाइयों में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन एक रात उसका पेट खराब हो जाता है ना, तो ही गेट्स अ वेरी बैड डिसेंट्री दैट नाइट। तो सुबह जब उठता है तो वो नईफ और लागिर है, और वही ब्रेव
and gallant young man becomes a real, मतलब उसकी वो जो heroism वगैरह है ना वो सारी है ना. इसी तरह बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी हो, बहुत इंटेलिजेंट इंसान भी हो, मैं अपने आप को अगर मेरी अंदर एक शदीद इमोशनल टर्मोइल है, for whatever reasons, something has triggered some anxiety, for example, तो वो मेरी जो वो जहानत है ना, my ability to be reasonable and talk in a understandable manner, even that will get affected. So even Wechsler who designed and developed the IQ test, उसने कहा कि जी एक तो ये rational intelligence है, लेकिन there are other factors which are extremely important, which he called non-intellective, which include emotional, social, personal sort of factors. सबसे interesting काम जो इस पे हुआ is a gentleman called Gardner. वो हमारा माली जो था ना उसका नाम रख दिया उन्होंने, Gardner उसका नाम था. He talked of multiple intelligences. उसने इंटेलिजेंस को डिफाइन ही ऐसे किया कि एक इंटेलिजेंस की बात करना ही गलत है. देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. तो वो जो बात करता है कहता है एक तो ये लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है जो ट्रेडिशनली जिसको हम देखते हैं. ही प्रपोज्ड 7 अदर इंटेलिजेंसेस कि एक तो ये मैथमेटिकल, communication, language, logic, इसकी intelligence है. Of the 7, one intelligence he called intrapersonal, which is the intelligence किसी एक पोजीशन में चाहे खड़ा हो आदमी चाहे बैठा हो, after a while you get a little, your body starts, I'll keep on moving a little bit, I hope it's not too disturbing for everyone. So intrapersonal है कि the ability to access one's own feelings. ठीक है, अभी इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता because it becomes too complicated. Then another kind of intelligence, क्या हुआ? ये बंद है? मैं इतनी देर से अभी बोलूं. अच्छा, हाँ, ठीक. Thank you. Another kind of intelligence, what he called interpersonal intelligence, which is the ability to understand others, understand the other person. What motivates the other? Etc. How do they work? How to work cooperatively with others? You know, this ability, ये आप लोगों को तो especially हम सब लोगों, people who are in senior positions, because you have to manage dozens of people, you have to interact with hundreds of people in almost every day. So this interpersonal intelligence is that ability to understand the others and how to work with them, how to get the best out of them, how to motivate them, and so on and so forth. और बाकी उसने कुछ इंटेलिजेंसेस की, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल, किनेस्थेटिक, लेकिन उनमें मैं नहीं जाता. ये इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल आई थिंक आर मोर जर्मेन टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. तो इसका मतलब जिस्ट ये है कि गार्डनर वाज द वन हु शोड कि जी self-awareness means awareness of your own emotions.
By the way, this is very easy to say. It's a very difficult thing to do. लेकिन there's no harm trying. और एक दो लफ्ज़ मैं और इस वक्त इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. I will be talking a little more about them. एक concept है empathy का. We'll talk more about it a little later. And social skills. अच्छा, चंद और research findings ने लोगों को, why did emotional intelligence start getting the importance it is now getting? Not in Pakistan, but in most of the educational systems in the West and most of the ये जो leadership and management के जो issues हैं, उनमें this is fairly center stage. It's not the only thing, but it is a very important issue. उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जब उन्होंने रिसर्च की तो they found कि IQ, वो जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस को अगर मैं लफ्ज़ IQ का इस्तेमाल करूँ उसके लिए, कि IQ by itself are not very good predictors of how you will perform on a job. कि अगर आपका IQ बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे होंगे. Not a very strong relationship there. And then if I broaden it, एक तो job performance है, दूसरा है in a sense general success in life. IQ is very little, I mean the relationship of IQ to job performance, of how well you perform on a job, or how successful you are on a job. कुछ researchers ने discover किया कि it's about 25%. यानी आपकी IQ का relationship आपकी job performance पे तकरीबन, कुछ और कहते हैं कि नहीं, it's about 10%. So जो हमारा ख्याल है नॉर्मली कि ये बच्चा तो इसने तो हर चीज़ में फर्स्ट डिवीज़न लिया है और इसने पता नहीं कितने कितने नंबर लिए हैं और इसने IQ टेस्ट पे लिया तो इस बच्ची ने तो इतना स्कोर किया था तो ये तो बहुत सक्सेसफुल होगी. I mean, it's not a good predictor of success in life. Okay? तो now this is something which seems like a luxury, लेकिन वहां पे अभी काम ऐसे हो रहा है कि वर्क प्लेस कितनी इमोशनली इंटेलिजेंट है, स्कूल कितना इमोशनली इंटेलिजेंट है. तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल द स्कूल ऑल्सो ट्राइज टू केटर टू द इमोशनल वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड. इसलिए कि असम्पशन ये होती है कि अगर आप सुबह आते ही चार बैंत लगाएं सबको, तो चाहे वो जितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो या बच्ची हो, उसके अगर खौफ दिल में बैठा हुआ है, and I'm sure each one of you can think of experiences you had, कि when you are fearful and sitting in a class, or fear of having a conversation even, है ना, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, आपके IQ टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप खौफज़दा हैं अपनी वर्क प्लेस पे, अपनी क्लास में, मैं खौफ का इसलिए कह रहा हूँ कि this is a very common experience which many of us have had, not everyone but many of us have. But if you are sitting in a classroom with fear, so you may end up keep on getting more and more marks, लेकिन एक उसका तो एक इफेक्ट भी होता है आपकी cognitive abilities पे, लेकिन दूसरा ये होता है कि if that is what you are bringing to every work situation, your performance at work or as a student starts suffering.
एक मैं कन्फेशन कर दूं, यार मेरा बड़ा अजीब सा मसला है, and I'm not modern enough to get the right kind of glasses. मेरी करीब की नज़र बिल्कुल ठीक है, so I don't need any glasses. लेकिन दूर से मुझे लोग clearly नहीं नजर आते, so when I want to look at you people, I have to put on my glasses. Anyway, so I hope you will excuse those little quirks. असल में अगर आदमी जरा सोचे ना, तो इमोशंस और इंटेलिजेंस को नॉर्मली लोग मुतजाद चीजें समझते हैं. अभी मैंने जो एग्जांपल्स भी दी ना, इसमें वो तजाद का एलिमेंट आ रहा था, ठीक है ना. बट इन फैक्ट once you have developed your skill or your emotional intelligence, then the dominance of your fear or your anxiety or your depression or your anger on your thoughts start diminishing. A. B. In fact, your emotions and your reasoning abilities start supporting each other. I don't know whether I try to see question marks in people's eyes. It's not very easy to see all the time. लेकिन मुझे खुद जब बात कई दफ़ा नहीं समझ आती तो मैं assume करता हूँ कि और को तो बिल्कुल किसी को और नहीं समझ आएगा. Let me try to rephrase this. Normally, emotions or intelligence, intellectual work, का टकराव होता है ना? वो टकराव इसलिए होता है, वो टकराव तब तक रहेगा जब तक मैं ये रियलाइज नहीं करना शुरू कर दूंगा कि मेरी इमोशंस इस वक्त मेरी इंटेलिजेंस को इफेक्ट कर रही हैं. द मोमेंट आई स्टार्ट रियलाइजिंग इट, वो टकराव खत्म हो जाएगा. मेरी बात समझ रहे हैं? आई मीन दिस emotions overriding your intelligence will happen as long as you do not recognize कि यार what is going on. Once you start recognizing, वो जो self awareness की मैं जो बात कर रहा था, once you start recognizing कि यार ये इस वक्त जो मुझे मुश्किल पड़ रही है, ये मुश्किल इसलिए नहीं है कि मैं ज़हनी तौर पे ज़ईफ हूँ, नहीं, ये मुझे इसलिए है कि मुझे इस वक्त शदीद एंग्जाइटी हो रही है ना. नॉर्मली हम उस चीज को रियलाइज नहीं करते कि यार व्हाट द डिफिकल्टी आई एम हैविंग, वो हमें लगता है, अमूमन हमें ये लगता है कि यार ये इफ इट्स एन इंटरपर्सनल सिचुएशन तो हमें लगता है कि ये दूसरा बंदा जो है ये इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही या कुन ज़हन है. अच्छा, एक चीज़ मैंने वैसे नोटिस किया, जस्ट टू ब्रेक द, ये ह्यूमन माइंड एंड बॉडी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें कि व्हेन यू आर लिसनिंग सॉर्ट ऑफ पैसिवली, तो आफ्टर अ वाइल योर माइंड राइटली सॉर्ट ऑफ ड्रिफ्ट्स अवे. वो कहीं और चला जाता है, वो कहीं और चला जाता है ना. इसलिए कि वो वन वे ट्रैफिक जो है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है, स्पेशली एजुकेशन. तो इस वक्त भी मुझे लगता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता, यू नो, सो इफ एनी वन ऑफ यू फील्स लाइक स्ट्रेचिंग और गेटिंग अप और डूइंग समथिंग टू कम बैक हियर, प्लीज डू दैट. देखें, मुझे ये कुछ नहीं है, मेरा तो ये है कि ये 3 घंटे शुड बी as useful for you as possible, है ना. मतलब आपका जिंदगी का टाइम तो यहाँ गुजर ही रहा है ना. तो अगर आप यहाँ से होपफुली कुछ ले जाएं तो वो तभी होगा कि if we are present most of the time. तो ये हो जाता है. It's not your fault. This is the way our minds work. When we are sitting there and just listening to this Dr. Gilani talking about all sorts of ridiculous things, so the mind drifts away and we start thinking of all sorts of other things. Anyway, so coming back to
तो इमोशंस आर नॉट द एनिमी ऑफ इंटेलिजेंस, है ना? नॉट एट ऑल। डोंट, मैं जो अभी आप बात की है उससे ये आप मतलब, बट इमोशंस emotions are a counterpart of intelligence. Let's put it that way. Whenever I am thinking, some emotions are involved. And the more aware I am of what those emotions are, the better my thinking will be. ये बड़ा मैं शदीद किस्म की simplification कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। Now, oh my God, चलेंगी किस वक्त तक है? 11:30 बजे तक है ना शायद, 10:30 बजे टी ब्रेक है। हाँ सॉरी, 10:30 बजे, 1.5 घंटे। थैंक यू सर। जैसे जनाब फरमा रहे हैं कि इमोशंस जो हैं जी, वो इंटेलिजेंस के लिए यूजफुल हैं, लेकिन अभी देखा गया है कि गुस्से का जो एलिमेंट है वो थिंकिंग पावर को कट कर देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस पर आप वो उस पे नहीं, वो उस पे हम जाएंगे। we'll come to, देखिए, I have to do two things. एक तो sort of everyday life में ये जो आपने एग्जांपल दी, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल बात है, बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा, ऐसी चीज़ों का जवाब अगर देना शुरू कर देना तो 3 घंटे क्या 300 घंटे भी गुजर जाएंगे। Not that they are unimportant. It's a very important question you are asking. लेकिन what I have tried to do is कि मैं आपको इसका एक फ्रेमवर्क दूं ताकि आप खुद इस पे सोचना शुरू कर दें, so that you are able to answer that question yourself. मेरी बात समझ रहे हैं? तो hopefully that is what I'll be trying to do today. कि जी ये अमल जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुस्सा तो बिल्कुल उड़ा देता है ना। Emotional intelligence, the concept of emotional intelligence was developed by 2 gentlemen. I hope there may be 2 ladies or 1 gentleman and another lady, इसलिए कि वो तो last name से ही चलाते हैं, मैंने तो इतना नहीं उसे देखा, Salovey and Mayer, but that's not important. 1990 में उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मॉनिटर one's own and others' feelings and emotions, to discriminate amongst them, and to use this information to guide one's thinking and action. ठीक है, इसको मतलब वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, simply ability to monitor one's own and others' feelings or emotions and to discriminate among them, and then use that information. ये ऐसे मतलब ये डिस्क्राइब करने में ऐसे आता है जैसे कोई मशीन चल रही है, ऐसे होता नहीं है। इट्स अ वेरी स्पॉन्टेनियस सॉर्ट ऑफ थिंग टू गाइड one's thinking and actions. $1995 ये 1990 की बात है। 1995 में he was a psychologist, trained in psychology, but he was a sort of a science writer, Daniel Goleman. आपने किसी को इम्प्रेस करना हो ना इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, तो डैनियल गोलमैन इज द sort of Goleman. Goleman. Daniel Goleman is the name to throw around. कि जी ये इमोशनल इंटेलिजेंस का गुरु है।
गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट्स डिस्क्राइब किए। अच्छा, नाउ ओहो, I'll be with you in just a second. बेटे इधर there's too much information there, तो I thought ये ऐसा है ना, ये हर एक के साथ इन्होंने ये स्टेपल कर दिया ना, तो ये आखिरी सफ़ा जो है ना, इसे बस सिर्फ ऐसे निकाल, है ना, सबका निकाल, है ना, बाकी को ना अलग करना। अच्छा, so the 4 components were, हाँ जी, you need a minute's break to stretch or anything? हैं? चलें? सेल्फ अवेयरनेस, इसका एक मैट्रिक्स है उसने बनाया है, वो मैं अभी आपको दे देता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, जी बोले। यस, मैं अभी बता रहा हूँ ना, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग इनटू। हाँ, मतलब उसकी ब्रॉड सी तो मैंने बता दी ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग्स। नहीं, डजंट मेक एनी सेंस। इस वक्त इफ आई आस्क यू, यू डोंट हैव टू टेल मी, if I ask each one of you, okay, what are you feeling? It may seem like a simple question, but it's not very simple. कि आप feel क्या कर रहे हैं? तो at any given, we are all always feeling something, thinking something, doing something. Like what you're doing right now is sitting. I don't know what you're thinking and I don't know what you're feeling. ठीक है ना? We can easily usually describe what I'm doing and what I'm thinking, but most of us have a lot of difficulty in trying to know or in trying to find out what am I feeling. हाँ, most of the time we are not aware of it. लेकिन अगर इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि जब आप ये एबिलिटी डेवलप कर लें कि आप जो फील कर रहे हैं ना, उसको आप देखना, आपके लिए आपकी ये तौफीक पैदा हो जाए कि आप उसे देख सकें। Again, it's not an easy thing to do, but it's very possible. Okay? So emotional intelligence is not only knowing what you feel, but I, for example, right now, am trying to have a sense of what you are feeling. आप जिन्होंने सवाल किया है, बड़ी मेहरबानी। I don't know how this has helped or not, but hopefully as we go on, it'll become a little clearer. तो वो पहले मैं 4 describe, then I'll just give these to you. Self-awareness, self-management, social awareness,
and relationship management. These are the 4 components. ये एक इनको दे दें, इनको दे दें, हैं? एक उधर दे दें और पास ऑन कराते रहें, उनको मैं कह दूंगा ये पूरा बंडल दे दें ना इनको, ये खुद आगे देती जाएंगी. हाँ, जस्ट पास इट ऑन. इसकी बैक साइड पे भी है. ओके जी. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस. ये what I am giving you, you will not need to take too many notes. This will help. आगे पास ऑन कर दें जी प्लीज. सोशल अवेयरनेस के बाद है रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सामान Has everyone gotten this? ये आगे पास करते रहें प्लीज. एक रख लें और आगे पास कर दें प्लीज. सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. हाँ, ये जो मैंने दिया है ना आपको फ्रेमवर्क, अच्छा गोलमैन ने, and I thought that was more, perhaps maybe more useful to you, instead of talking about emotional intelligence, he talks of emotional competencies. ठीक है ना कि competencies क्या हैं. जैसे आप जॉब में कॉम्पिटेंट होते हैं तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से भी ही टॉक्स अबाउट सर्टेन कॉम्पिटेंस. ओके, नाउ एवरीवन हैज रिसीव्ड दिस फ्रेमवर्क. बड़ी मेहरबानी. अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टफ, ये जो टेबल बनी हुई है उसके नीचे फिर कुछ बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं. सो लेट्स फर्स्ट गो ओवर दोस बुलेट पॉइंट्स. एक तो सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे जजों को कहने में ज़रा झिझक होती है. हम अमूमन लोग ये समझते हैं ना कि मैंने PhD कर लिया है, या मैं प्रोफेसर हूँ, या मैं सेशन जज हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे तो और कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है. आई नो एवरीथिंग, यू नो. तो दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, बट एनीवे आई डोंट मीन टू इंसल्ट एनीवन. लेकिन इमोशनल कॉम्पिटेंसीज कैन एक्चुअली बी लर्नड, लेकिन यू हैव टू बी ओपन टू लर्निंग देम. ये हमें नहीं लर्न हो जाती चूंकि मैं कह रहा हूँ. मेरे कहने से नहीं लर्न करेंगे आप. आप अगर खुद तैयार हो जाएंगे, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज कैन बी लर्न. लेकिन एक मैं और आपको बात बता दूं. वैसे देखें, मैंने तो काफी जिंदगी गुजार लिया. I've sort of done I've paid my dues in this life. देखें, you know, there is, I'm sticking my neck out a little bit here, लेकिन मैं simply बात करूं. देखिए, there are 2 ways of doing a job, any job. एक तो ये है कि जी मुझसे जो required है ना, कि बस मैं वो मक्खी पे मक्खी मारता रहूं और बस इसको मैंने, ये मेरा जो टेन्योर है या मेरा जो पीरियड है, इसको मैंने गुजारना है ना. That is one way. It's a very unsatisfying way of work. दूसरा ये है कि you really try to excel. I don't know what else to call it. You try to do a good job. कि आपकी एक ऐसी मोटिवेशन हो कि मैं ये काम तो मुझे मिला है,
मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो इसकी हैं, लेकिन मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे ही नहीं रहना, मैंने इसे आगे पुश करना है ना. Now, when one is working, whether you're a plumber or you're the prime minister, doesn't matter. लेकिन what you bring to that job is what matters. तो satisfaction genuinely and sort of enjoying your work, although that may be a little stretching it, लेकिन in a sense enjoying your work, ये ना लगेगा आपको बोझ, is not possible unless you start, how should I say it, unless you start looking at how can you make this better. And you can't start doing that unless your emotional competencies are developed. अच्छा, सारी competencies की ज़रूरत नहीं होती. अच्छा, the second bullet point is कि ये competencies जो हैं, ये 20 हैं, in case you count. If you look at all of these, I'll go to the table more specifically in a few minutes. लेकिन there are 20 competencies in there. Many of them are bunched together, they are clustered together. है ना, मतलब उनका एक दूसरे के साथ लिंक है. All of them are finally linked to each other, लेकिन there are some which are more, we don't need to go into which ones are more clustered together. लेकिन अगर आप किसी एक competency में progress करते हैं या करती हैं, तो it is likely कि 2-4 और में भी आप progress कर जाएंगी. समझ रहे हैं ना? So it's not like one each, they are not separate. ये purposes of analysis के लिए separate किया हुआ है, but actually they are not separate competencies. They are not like totally separate from each other. They are all interlinked. Some of them are much more closely interlinked than others. So you can pick up or decide whichever one is easiest for you to start working on. And as you start working on it, the other competencies also will start improving. So that's the optimistic end of this thing, कि आपको 20 पे आप काम करने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 पे आप काम करना शुरू कर दें, तो बाकी खुद ही इमर्ज होनी शुरू हो जाएंगे, उसके साथ डेवलप होनी शुरू हो जाएंगे. ठीक है? Bullet point number 3 है, I would invite all of you to just look at it. ठीक है? What is it saying? ये टेबल के नीचे बुलेट पॉइंट नंबर 3 है. जी? नहीं, इसका मतलब क्या है? वो तो आपने अल्फाज पढ़ दिए ना. जी हाँ, वो जॉब परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी सेल्फ अवेयरनेस कोई all or nothing, let's just put it, I'm giving a big example. It's not an all or nothing thing. ये competencies all or nothing हो ही नहीं सकती. ठीक है ना? कुछ लोग जरा ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, कुछ बहुत कम सेल्फ अवेयर होते हैं, कुछ होते हैं जो तकरीबन जीरो तो नहीं हो सकती, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस, they don't have much of self awareness, for example, and so on and so forth. So any competency, you could be at any level, but what Goldman is saying is that as you start developing that competency, तो एक point आ जाता है कि वो
उसके पॉजिटिव असरात आपकी परफॉर्मेंस पे आने शुरू हो जाते हैं। वो क्या पॉइंट है, दैट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो clusters, competencies are in clusters, they are all interlinked, but some are closer to others than and so on and so forth. और जब आप एक competency develop करते हैं तो एक point आ जाता है कि वो इतनी develop हो जाती है, it comes to a degree where it starts having a positive impact on your performance, ठीक है। ये चौथा point तो है, I think it's fairly self-evident. I'll just not go into any details of it. Okay, बोले क्या confusion है? It's talking about a mastery of a critical mass of competence. What actually does it define critical mass? अच्छा, your critical mass कोई ऐसे चीज नहीं है। Critical mass is a phrase. Now I'm trying to think of an example which would. अच्छा चले मैं I'll try to come to an example from your एक केस है आपके सामने, है ना, और उसमें कुछ एविडेंस है, ठीक है। Now that evidence will not cover, let's go to a civil case, not a criminal case, because a criminal case has a different parameters, उसके फर्क होते हैं। Civil case है और उसमें आपके पास एविडेंस आ जाती है, लेकिन वो 100 रुपए की बात है, उसमें आपको 55 रुपए की जब एविडेंस आ जाए, लेट्स से, तो यू मे फील एज अ जज कि यार दिस इज एनफ ऑफ एविडेंस टू गिव अस जजमेंट, ठीक है। नाउ दैट एविडेंस, देयर इज द क्रिटिकल मास। नाउ वो कोई एब्सोल्यूट नहीं है, वो आप जज करते हैं कि अच्छा नाउ इट हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट I will feel comfortable in making a decision on this, ठीक है ना। So now what is that critical mass? वो एक जज कहेगा कि नहीं यार ये जब तक 80, मतलब I'm using it, no one thinks like that, लेकिन you come to a point where you feel that this evidence is sort of sufficient, है ना, to arrive at a judgment, ठीक है ना। वो now another way you can think of that sufficiency phenomenon is that there is a critical mass of evidence. मेरी बात समझ रहे हैं ना कि वो कहावत सुनी होगी आपने, the last straw on the camel's back। उस कहावत का मतलब पता है क्या, कि एक ऊंट के ऊपर आपने सामान लादना शुरू कर दिया और फिर एक स्ट्रॉ डाला तो वो ऊंट बैठ गया। अच्छा, वो एक जो स्ट्रॉ डाला ना, तो द क्रिटिकल मास ऑफ द एबिलिटी of the camel to keep standing was over, it got across. So that is the critical mass, is that's the meaning of the word. तो जब वो कहता है ना mastery of a critical mass of competencies, ठीक है ना। अभी वो critical mass एक के लिए एक होगा, दूसरे के लिए दूसरा होगा, तीसरे के लिए तीसरा होगा, लेकिन there is no sort of objective way of quantifying what is a critical mass. We can say it's a boiling point. Exactly, that's another excellent, हाँ, exactly. वो boiling point जो होता है ना, वो एक shift आ जाती है, you know, water starts turning into steam. That's the boiling point का तो ये मतलब है ना, तो that's the critical shift. तो critical mass का ये, ठीक है। If I manage to confuse you a little bit, I'm doing a good job.
नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ इसलिए क्या ये चीज़ें ऐसे एब्सोल्यूट ब्लैक एंड वाइट तो एक्चुअली होती नहीं है। हमें ख्याल होता है कि हम बड़ा बड़ा क्लियर हेडेड है और ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग कि वी फील दैट वे, थिंग्स आर रियली नॉट नेसेसरली एक्चुअली दैट वे। The most powerful EI competencies, EI is emotional intelligence, sorry, I may now start. I think by now you've been bored enough with this topic, the EI और emotional intelligence का। वो ये जॉब परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहा है बाय द वे, और चूंकि आप सब लोग हैवी ड्यूटी किस्म के अफसरान हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू इनमें जाएंगे। ये आखिरी बुलेट पॉइंट आई जस्ट पुट देयर एज अ टीजर सो टू से, कि ये नहीं है कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और आपकी जो मैथमेटिकल एबिलिटीज हैं और लॉजिक है वो बिल्कुल यूजलेस हैं। नो वन इज सेइंग दैट एट ऑल, दोज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑल्सो, मतलब योर एबिलिटी टू एनालाइज थिंग्स। और सबसे उसमें जो इम्पोर्टेंट है कॉग्निटिव चीज में जॉब परफॉर्मेंस के हवाले से इज एनालिटिक थिंकिंग। प्लीज डोंट आस्क मी व्हाट इज एनालिटिक थिंकिंग। नहीं, लेकिन आई डू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनालिटिक थिंकिंग। जी, that's asking in a polite way. नहीं, मैं तो चूंकि एक तो नफ्सियात में भी मेरा मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी और एजुकेशन में मेरा भी इंटरेस्ट है, तो एनालिटिक थिंकिंग इज how should I say? मैं पहले आम फैम उस पे बात करता हूँ, एंड इट्स के चीज़ों के बारे में सोचना, you know? Well, but analytic thinking is based, there are some other requirements also. Critically and based on evidence. The two necessary things for analytic thinking is कि based on, लेकिन खुद से सोचना. And now here is where I come to my great laziness myself and the general human laziness. किसी ने अगर किसी चीज के बारे में सोचा हुआ है तो हमारा ख्याल होता है कि मेरे सोचने की क्या जरूरत है ना? वो अप्लाइंग वंस माइंड, आपकी प्रोफेशन में अप्लाइंग वंस माइंड का बहुत जिक्र होता है ना। बाय द वे थोड़ा सा मैंने मेरी वकालत की प्रोफेशन से आगे, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ डिट्रैक्टिंग अ लिटिल बिट, लेकिन देयर इज नो हार्म इन डिट्रैक्टिंग। मैंने 10 साल अभी कनाडा में प्रैक्टिस की ना एज अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन वो कैनेडियन सिस्टम से बड़े वेरी वेल डेवलप्ड है। Most of the people I worked with were people who had been in car accidents. अच्छा, वो कार एक्सीडेंट उनको इंजरीज वगैरह हो जाती थी, उसकी वजह से many of them were disabled, many of them couldn't work, then because of their pain and their physical difficulties they went into depression, कुछ लोगों को post traumatic stress हो जाता था, क्या हो, anyway. लेकिन जो आपके point of view से what I learned interestingly is besides work के अच्छा their treatment had to be paid for by the insurer, जिसके साथ उन्होंने अपनी गाड़ी इंश्योर, वहाँ पे इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं रख सकते. So if you have a car
and you're in an accident and you have these difficulties where you either need hospitalization or you need psychological treatment or any other treatment, then the insurance is supposed to cover it. अच्छा, फिर बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे कि वो इंश्योरेंस और वो क्लाइंट जो होता था उनमें लीगल केस बन जाता था, बिकॉज द इंश्योरेंस वुड से कि नहीं, इसके बाद हमने नहीं पैसे देने. So I had to then, as an sort of an expert, I had to write reports for the court. मुझे रिपोर्ट लिखनी पड़ती थी कोर्ट्स के लिए, and I could be also summoned as a witness, although I never was, लेकिन I could be theoretically. तो मुझे रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती थी कोर्ट्स के लिए, of course always on the behalf of the respondent कहते हैं कि क्या, I think the जो जख्मी हुआ बंदा या बंदी थी ना, मैं उनके बिहाफ पे रिपोर्ट से, हाँ इंजर्ड, हाँ विक्टिम तो नहीं. Anyway, so when I had to draft those reports, I had to be very careful about how the तो उसमें ये application of the mind का जो issue था ना, ये सारी मैंने कहीं और चला इसलिए नहीं गया कि I don't want to sort of, लेकिन ये जो analytic thinking है ना, ये आखिरी bullet point है, I'll just tarry on this for a minute, कि कॉग्निटिव साइड पे, इमोशनल साइड पे तो कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो 5-6 हैं ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं. नॉट दैट द अदर्स आर टोटली इररिलेवेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन गोल्डमैन्स रिसर्च इन लार्जली इन द यूएस. एक तो प्रॉब्लम ये है हमारा कि बहुत सारी, और मोस्ट ऑफ द रिसर्च इज इन सोसाइटीज एंड विद पीपल हु आर नॉट फ्रॉम हियर. तो उनकी जनरल फाइंडिंग्स तो one can accept them, but specificity में one has to be a little careful. ठीक हो गया जी? Okay, now let's go. एक साइकोलॉजिकल ब्रेक ले लें. No, I don't mean a break. Even 10 seconds is enough. Which really means that just relax. ठीक है? Okay. ये recognition वाले साइड पे पहले जाते हैं. ये फ्रेमवर्क जो है ना मैंने दिया हुआ है, लेफ्ट को recognition है, दूसरा है regulation. तो let's first start with recognition and self-awareness and emotional self-awareness. इस पे तो आपने जो सवाल पूछा था तो उसके जवाब में I think I cannot emphasize enough that this is a very unnatural thing. Recognizing one's own feelings is something which does not come naturally. It comes to a very little degree in most cases, and this is a competency to which there is sort of no limit. वो जो सूफी होता है ना, जब पहुंचा हुआ इंसान होता है, he or she are self-aware all the time. Ordinary mortals like you and me are usually not that self-aware, लेकिन इस competency like all other competencies को learn किया जा सकता है.
ठीक है ना? सो अभी इसमें मैं ज़्यादा और नहीं चाहता, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, इसलिए कि इसके नीचे एक और असम्पशन है, और वो असम्पशन, डिफ़िकल्टी इसकी वजह है हमारे अंदर एक असम्पशन है कि हमारा अपना ख्याल होता है कि वी डोंट क्वेश्चन आवर ओन थिंकिंग एंड आवर ओन एक्शंस. We don't really, we are not very, usually most of us are not very good at self-assessment. No, oh, that's a slightly different. हाँ, वो उसका मतलब कुछ और है. That is a little closer. अपने मन में डूब कर पा जा सुराग. That's a bit closer. हाँ. जी, हाँ. That is हाँ. Good. At least 2 people are listening. मेरे ये मतलब नहीं कि और भी नहीं सीख रहे, लेकिन हाँ. But that's perfectly correct. तो अपनी strengths or weaknesses, now one can do that, one can actually learn. अभी मुझे तो अपना आप मजमूआ ऑफ स्ट्रेंथ्स लगता है ना, मुझ में कैसे वीकनेस हो सकती है? मैंने तो PhD की हुई है, मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ, मैं तो VC रहा हूँ, है ना, मैं तो ऐसी ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठता हूँ, मुझ में कैसे वीकनेस हो सकती है? Of course, that's stupid, but all of us feel like that. मैं तो जी 4 बच्चों की माँ हूँ, और मैंने तो जी सेशन जज हूँ, और मैं तो जी प्रोफेसर हूँ. But the reality is all of us have strengths and weaknesses. One little thing which you can do, which will help, किसी और को बताने की जरूरत नहीं होती, अपने साथ ही अपनी स्ट्रेंथ्स लिस्ट करें, अपने साथ ही अपनी वीकनेसेस लिस्ट करें, है ना? Look, finally it is really about you. You are the important, you are the important person. मतलब मैं तो जिन लोगों को देखता हूँ ना कि यार आप अगर ट्रबल्ड हो, आपको वो है, तो आपका काम तो सफर करेगा ना, लेकिन ये पहली तौफीक पैदा हो जाए कि हाँ, I could be troubled, I could have weaknesses. So an honest self-assessment is a difficult thing to do, but it is something which we can learn to do. अच्छा, एक दफा ये आदमी करना शुरू कर दे ना कि आप अपनी एबिलिटीज को भी पहचानना शुरू कर दें, अपनी लिमिटेशंस को भी पहचानना शुरू कर दें, then you don't have any trouble getting help. You seek feedback. आपको अगर लगता है कि यार इस चीज में मैं जरा इतना strong नहीं हूं, तो you can ask someone, you can go to Google, you can read something, you can get some help. And now the difficult part is accepting the fact कि यार ये मुझ में weakness है. That is the difficult part. लेकिन एक दफा आप वो अगर accept कर लें, and एक मैं मतलब simple बात कर दूं कि यार हर इंसान में, I mean unless you are a prophet or something like that, all of us have lots of weaknesses. And it's part of the human condition. मतलब मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी आप में कोई कमी रह गई, ये मुझ में भी बहुत सारी भी हर इंसान में होती. अगर आदमी उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे, एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, don't start blaming someone else या कि जी उसने मेरे जज साहब ने मेरे साथ ऐसे किया तो इसलिए नहीं, उससे नहीं होगा.
only when you are open to the fact that you may have weaknesses, only then can you learn from your mistakes. वो एक बड़ी क्लीशे किस्म की कहावतें होती हैं, लेकिन they have a lot of truth. Everyone makes mistakes. The difference is, are you learning anything from it or are you not learning anything from it? If you're not learning anything from your mistakes, there's something terribly wrong. Once you start becoming a little more self-aware and accepting of the fact that yes, I can make mistakes, I may have made a mistake here, only then is it possible for you to learn from those mistakes. I hope कि आपके ज़हनों में अपने बारे में तो मुश्किल है, बहुत सारे लोगों का ख्याल आ रहा होगा कि वो बंदा वही मिस्टेक करता रहता है. I'm sure many of you have experienced that, and it's very frustrating. You see that this person has done this thing and he keeps on repeating that thing. है ना? वो आइंस्टाइन की एक बहुत मजे की saying है, which I think is a great definition of insanity. Insanity का तो पता है ना क्या होता है? So, no, I'm sorry, I'm just joking. I know you know what is that. I don't remember the exact thing, but Einstein said that insanity is repeating the same thing over and over again and expecting different results. Huh? ये जब मैंने सुनी ना तो then I started looking at what my friends and colleagues and so many people. So that will keep on happening unless you realize that and accept that you've made a mistake. Once you are able to accept that, once you're able to recognize your mistake and accept it, then you can learn from it. Otherwise, you'll keep on repeating it. ये emotional self-awareness में to recognizing one's own feelings, realizing one's own strengths and weaknesses. ये strengths and weaknesses में थोड़ा सा self-assessment का issue जो है, that is a critical part. Self-confidence. अगर आप वो टेबल में देखें ना, that's the third point. Under recognition of self. Self-confidence क्या चीज़ है? ओए, जैसे आपका ज़हन up and down होता है ना, listening to the same voice, seeing the same person, मेरा भी up and down होता है ना. my thinking flags, it gets slower, then it gets better. So, and that is a function of you. तो ये ऐसे नहीं होता कि किसी भी interaction में it's never one way. Of course, you are affecting me as much as I, well, hopefully less than, but as much as I may be affecting you. हाँ जी, तो self confidence क्या चीज़ है यार? Yes. The person is satisfied with from his activities. What he's doing is It's based on that. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. ये जो है ना, मतलब being self-confident and being right are not the same thing. Self-confidence is an emotional quality. है ना? और Goldman और research ने ये discover कि a person who is confident, अभी मैं तो
हजार चीज़ें, my mind is like I don't know, it's all messed up. बहुत सारी चीज़ें जहन में चलती रहती हैं. So I keep on looking at people and what they are doing and so on and so forth. Anyway, a self-confident person मतलब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है. They can perform much better. Self-confidence doesn't mean that you have no weaknesses. Self-confidence doesn't mean that you're always right. है ना? Self-confidence just means कि यार whatever you are doing, you are going to give your best to it. And you are confident that you will make a positive impact. मतलब वो एक attitudinal, it's an attitude really, this whole issue of self-confidence. When that self-confident person becomes overconfident. No, that is not a self-confident person. वो एक हाँ बहुत, I'm very glad, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. देखें, okay, I may be asking. Overconfidence भी होता है. जी, वो बिल्कुल वो बात कर रहे हैं. नहीं, वो is not overconfidence. That's not self-confidence. That is something else. अभी देखें मैं यहाँ How can you differentiate confident person and overconfident? Okay, what do you think of me? Do you think I'm confident or overconfident? You are Okay, how do you know? You speak within parameters. ठीक है. Topic subjects. अच्छा, अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता मैं क्या करता? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सवाल का जवाब आपके पास है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, है ना? रियलिटी इज कि ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन इज इम्पोजिंग. सबसे बड़ा उसकी बातों में एक कोवर्शन का एलिमेंट होता है. वो अपनी पावर असर्ट कर रहा होता है. नाउ दिस इज अवेयरनेस ऑफ द अदर्स. आप समझ जाते हैं ना, आप समझ जाते हैं कि ये बंदा यार ये कोई ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है? Where is that coming from? That is part of emotional intelligence. जब आप किसी के बारे में, you may be right or may be wrong, that's besides the question, but all of us are always assessing the other, है ना? Not in terms of कि जी जज कितना अच्छा है या इसके नंबर कितने होंगे, लेकिन कि बंदा कैसा है, ये ओवर कॉन्फिडेंट है, ये तो बड़ा है यार जी, गुस्सेनाक सा लगता है, ये है वो है. What are we doing? It's the social, what do you call it? Social awareness का issue है. ये जो देखे ना, ये questions I understand, लेकिन in a sense वो confident, self-confident और over-confident बंदे में कैसे फर्क होता है? There is no, I can't tell you, maybe I can, but it will not be too helpful. Maybe I can कि अगर ये behaviors हों तो ये टिक करें, तो जब 4 हो जाए तो अब ये overconfident बंदा है, और ये इसमें 6 इधर आ जाए तो self-confident बंदा है. But it's not going to help you. What I am sort of inviting you to do, all of you, is कि ये ability कि जी अच्छा ये बंदा एक्चुअली कॉन्फिडेंट है या ये कोई ओवर कॉन्फिडेंट है या ये क्या कर रहा है मेरे साथ, या हाउ ही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक यू. आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर जजेस इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेंस ऑफ वेयर द अदर पर्सन, आम फैन जबान में कि वेयर इज दिस अदर पर्सन कमिंग फ्रॉम, कि वो खड़ा कहाँ है. इसलिए कि अभी लगता हमें ऐसे है, we are come to the tea break time, but I'll just take a minute on this. This is something which, मेरा भाई भी बहुत बड़ा वकील है पाकिस्तान का, तो I know, and long time ago I went to one of the Supreme Court things, and what I realized was that it was very little to have to do with law.
a lot of it had to do of the relationship between the judge and the lawyer. What was going on in the court was more about the relationship between the judge and the lawyer and less about the law. This is terrible. This is terrible. उस relationship को बिल्कुल आप खारिज नहीं कर सकते, लेकिन जब वो dominant हो जाता है, then something is really very seriously wrong. अभी मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहता, मैं सिर्फ मेरा point ये है कि you as judges, you know, if you develop the competence to be aware of your own self and to be aware of that lawyer who's standing there in front of you, you start being able to develop the sense कि जी where he or she is coming from. It will help you a lot in making decisions according to the law. इसलिए कि emotional intelligence, the emotional intelligence, इसमें थोड़ी बाद में मैं थोड़ा सा जाऊंगा, emotional intelligence has a very dark side also. Emotionally intelligent people can manipulate others like nobody's business. जो बहुत ही ज़्यादा emotionally intelligent इंसान होगा ना, he or she will know how to play with the other person's emotions. और ये जो conman होते हैं, ये ठग जिन्हें कहते हैं, ये what are they? There are many politicians, not all of them. All our politicians are trying to manipulate. And I don't fault them for that. That's fine. Everyone tries to manipulate. हम सब करते हैं. नहीं, हम सब करते हैं. मतलब we are all हमारे self interest होते हैं. लेकिन once you are able to start recognizing when you are doing it yourself, you are likely to do it lesser. And then you're also likely to start recognizing when the other one is trying to do it to you. Anyway, we have drifted off into interesting but slightly different. तो 11 बजे फिर मिलेंगे गालिबन. Thank you. I'll see you at 11? Yeah. I guess most people are back. Challenge, let's move on. अभी सेल्फ पे ही चल रहे हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस की तो बात मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है. एक मैं बात कर दूं, ये Uzma sort of pointed out to me कि in a sense it's impossible to anticipate किस situations को आपको face करना पड़ेगा. तो hopefully, so in the A and B ये है कि within 3 hours one can only cover so much. तो वो बात कर रही थी, बात ठीक कर रही थी, कहते हैं जी कोई ऐसी चीज़ें हमें बताएं कि which we can actually use. So what I'm hoping, I don't know whether I will succeed or not, what I'm hoping is that I share with you certain principles and certain ways of how you can develop your emotional competencies. And then if anyone is interested in stuff, आजकल दुनिया में तो there is tons of material on Google, on the internet. मतलब अगर कोई interested हो to take it forward, मतलब इन 3 घंटों में ये ना expect करें कि if I can hopefully just manage to get the ball rolling for each one of you, to then if you consider that it's important enough and it will be helpful to you, so then you can start doing your own reading, and there are probably exercises and stuff which also you can start picking up.
एक सेल्फ असेसमेंट का इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एक सेल्फ असेसमेंट का इंस्ट्रूमेंट मैंने डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाला हुआ है. आई विल बी गिविंग इट टू यू एट द एंड ऑफ द थिंग. आप अपने तौर पे इसको करें एंड इट टेल्स यू हाउ टू स्कोर इट एंड how to use it, how to use that information for further thing. So, what I want to say is that let's keep our expectations realistic. In 3 hours, only so much can happen, and if that happens, that's more than enough. कि आप लोग खुद ही अगर इसको आगे देखना शुरू कर दें. ठीक है जी. अभी आते हैं इशू सेल्फ मैनेजमेंट में. ठीक है. सेल्फ मैनेजमेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट है एंड विच ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड इज दिस होल इशू ऑफ इमोशनल सेल्फ कंट्रोल. अच्छा, इसके इंडिकेटर्स सिंपल ये हैं कि आप डिस्ट्रेस्ड ना हो, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो लो रहे ना. वो स्ट्रेस लेवल को लो रखने के क्या तरीके हैं वो दैट्स अ सेपरेट मैटर. लेकिन इमोशनल सेल्फ कंट्रोल प्राइमरीली मीन्स कि यू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल. सो जब आप फील करें, आप सेंस करें कि मेरा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया, देन यू डू समथिंग टू रिड्यूस दैट स्ट्रेस. बिकॉज इफ़ यू गो टू वर्क while you are stressed, it will start affecting your performance fairly badly. और इसका एक वही होता है कि कुछ लोग होते हैं, and this is again a skill you can develop. कुछ लोग होते हैं वो बहुत भी situation stressful हो तो वो उनको इतना disturb नहीं करती. एक तो ये होता है कि आदमी खुद अपना स्ट्रेस लेके जाता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं या कुछ किस्से हो जाते हैं. Now, how much does that impact you? That's also an important factor. कि जब एक situation stressful हो गई, आप उसका कितना असर ले रही हैं या ले रहे हैं, है ना. तो उस असर को मिनिमम रखने का भी you can manage yourself in such a way that when the situation outside is stressful, मतलब आपसे अगर कोई, now here is the sort of one simple sort of an example. आपसे कोई बदतमीजी करता है in the court, whether it's a lawyer or a witness or anyone, है ना. Now, a person who has a little emotional self-control will not react in the same manner, है ना. But will now how you do that will come towards the end. I'll be giving you a few tips as to how to do that. लेकिन दूसरा यह है कि आगे से बंदा कुछ भी बदतमीजी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, you remain calm. You don't sort of get pulled in. और ये बड़ा मुश्किल काम है. ये होता यह है कि जब emotions बहुत ज़्यादा flow कर रहे हो ना, और लोगों गुस्सा हो या कुछ हो, तो इंसान पुल इन हो जाता है, स्पेशली इफ इट्स डायरेक्टेड एट यू. आप कोई गुस्सा करता है ना, बट इट इज़ पॉसिबल, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू डू इट ऑल्सो, इट इज़ पॉसिबल नॉट टू बी सो इफेक्टेड बाय द अदर वन व्हेन द अदर पर्सन इज एक्सप्रेसिंग सम एंगर. तो इमोशनल सेल्फ कंट्रोल इज ए इम्पॉर्टेंट इशू. दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट का ट्रस्टवर्दीनेस. अच्छा, ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप होती है कि when you have some clarity about your own principles and values. आपको अपने principles और values के बारे में कुछ clarity, पहले उसकी clarity होनी चाहिए कि what is it that you believe in, what is it that you stand for. ठीक है ना. और फिर उनके मुताबिक act करते रहना, है ना. और जो that will, what happens is that आप खुद भी आप अपने, I'll again appeal to your own experiences. I'm sure you've come across people where you feel that this person, I can trust this person. There are other people where you feel I can't trust them. Pakistan mein the trust is a very, very
मतलब it's very difficult to trust many people. लेकिन पहला कदम जो होता है, now this my psychologist is popping up here. अगर आप अपने आप को trustworthy बना दें ना, कि where you say what you mean, you do what you actually stand for, खुद पहले. Once you become a little more trustworthy, it has a huge impact. आपके तो बहुत सारे लोग होंगे, subordinates होंगे, आपके ऊपर होंगे, you are dealing with, as I said, hundreds of people. लेकिन अगर आप अपनी, now how does one become trustworthy? You can't pretend to be trustworthy. वो ऐसे होता नहीं है. उसका यही होता है कि अपने values जो हैं, अपने principles हैं, वो लोगों को you should be able to share them with other people. This is what I stand for. This is how I function. And then acting, आपकी intentions क्या हैं, आपकी feelings क्या हैं, वो share करें. And एक openness की ज़रूरत होती है trustworthiness में. You have to be a little open. लेकिन फिर act उन्हीं principles और values के मुताबिक consistently करते रहना. That is what makes a person trustworthy. आप पता है कि इस बंदे का मुझे पता है. The person who you trust, why do you trust him or her? You know that given any situation, this is this way the person is likely to behave because उसके principles, उसके values आपको पता है. ठीक है? और when you are trustworthy yourself, तो फिर आपको ये भी मुश्किल नहीं होती. आप अगर कोई गलती करें ना, तो you don't have any difficulty in saying कि यार sorry I made a mistake. है ना? वो जब आदमी open नहीं होता, तो फिर वो mistake is something which you try to hide, which you try to cover up, which you try to rationalize. कुछ कह रहे थे? Now, अभी मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी चीज़ कितनी important है. Each one of you make your own, reach your own conclusion. Conscientiousness. You know what conscientiousness is? Conscientiousness is sort of I don't know. Conscientious में दो elements हैं. एक है कि हार्ड वर्किंग का है, लेकिन दूसरा ये है कि वो जो काम है जी, तो अपने आप को कॉन्शियंशियस रखना ताकि आप काम प्रॉपरली एंड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी करते रहो. तो केयरफुल रहना पड़ता है आदमी को खासा. सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ता है. And the third one is the more difficult one because our general culture is anti that, is being scrupulous. कि आप complete honesty के साथ और scrupulous के साथ अपनी responsibilities जो हैं इसलिए ना पूरी करें कि आपके ऊपर कोई हाई कोर्ट का जज बैठा है या you do it because you do it. मेरी बात समझे ना. ये मुझे कभी-कभी उल्टे सीधे शेर भी याद आते हैं. This may, I hope it doesn't offend anyone. गालिब का एक शेर है ना, कहता है ताअत से ता रहे न महो अंग बी की लाग, दो जख्म डाल दे कोई जाकर बहिश्त को. वो पॉइंट क्या है कि आप अच्छा काम इसलिए ना करें कि मैंने जन्नत में जाना है. आप अच्छा काम इसलिए करें कि बस मैंने अच्छा काम करना है. That is conscientiousness. आप अच्छा काम मेहनत इसलिए ना करें कि जी इससे आपकी प्रमोशन होगी. वो होगी, जरूर होगी. आप जन्नत में जाएंगे, जरूर जाएंगे. But that shouldn't be the motivation for it.
इसलिए कि आपके सर पे हर वक्त तो चौकीदार नहीं बैठा रह सकता। तो सेल्फ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ी इकाई जो है इज दिस कॉन्शियसनेस इशू कि you do your work to the best of your ability regardless of whether someone is watching you or not, है ना? ये रूल ऑफ लॉ की एस्टैब्लिशमेंट के पीछे इन अ सेंस कॉन्शियसनेस है। यू नो, पाकिस्तान में अभी थिंग्स आर इम्प्रूविंग, आई एक्चुअली फील थिंग्स आर इम्प्रूविंग इन दैट, लेकिन जनरली पीपल only follow the law when they know that someone is going to catch them if they don't follow it. If they feel that no one is going to catch them, so I'm not talking of general, there is a small group of people who feel that if I am not caught, I can do anything. So, I mean, I'm digressing a little bit. My point here is that for each one of us, if we start doing our work to the best of our ability, just because we are doing that work and that is what we should be doing, if one develops that attitude, so it helps a lot. It will improve your performance very. उसके वो जो दुनियावी अजर या अगले जहान के अजर हैं वो तो मिलेंगे आपको, वो तो no one is taking that away from you, but your performance will increase tremendously. जी? ज़मीर इतना नहीं है, it's वो आप कॉन्शियस उसकी बात कर रहे हैं, कॉन्शियंस की बात कर रहे हैं। कॉन्शियंशियसनेस कॉन्शियंस से ही निकला है, लेकिन इट हैज मोर टू डू विद वर्क, है ना? एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परफेक्ट होंगे कभी, जाहिर है नेचुरली, बट यू गिव इट द बेस्ट यू हैव, है ना? Of course you will also make mistakes and you will, but that's not the point. Lekin the best you give it to it. The fourth one is, we are still talking on self-management, is this whole issue of adaptability, which is being open to new information and letting go of old assumptions. कई दफ़ा हमारा ये होता है कि हमने कुछ चीज़ों के बारे में understanding develop की हुई होती है. It's very difficult when new information starts coming in. We may have to revise those assumptions. We may have to change them. We never have to throw them out, but we have to change them. तो adaptability का ये मतलब है, this is psychological. एक तो adaptability और किस्म की होती है, लेकिन I'm talking of psychological adaptability. ठीक है, फिर ये पांचवी चीज जो है, which is a big thing in North America, adaptability ये है, देखें आप चीज़ों को एक ख़ास तरीके, let's say आप किसी चीज़ों को किसी चीज़ को एक ख़ास तरीके से समझ रहे हैं, है ना? और उस समझ की बुनियाद पे आप एक्ट करते हैं, and usually that works well for you. लेकिन कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि इर्द गिर्द की सिचुएशन में तब्दीली आ जाती है ना? Something happens outside, है ना? Where if you're not open to that new changed situation, तो आप old assumptions पे ही काम करते रहेंगे, ठीक है ना? जब ज़रूरत ज़रा डिफरेंट काम की होगी तो आप अडेप्ट नहीं कर रहे, मतलब चीज़ें आपके इर्द गिर्द तब्दील हो रही हैं, लेकिन आप उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं कर पा रहे. Let me put it that way. Adaptability is the ability to change. मतलब आदमी गिरगिट तो नहीं बनता, ये मेरा मतलब नहीं है कि हर सिचुएशन फ़र्क होती है, लेकिन कई दफ़ा बहुत नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कोई सिचुएशन बहुत मेजर तरीके से बदल जाती है. जी, यस. एक मैं आपको एक और सिंपल मिसाल दूं, which probably will. Suppose you have an immediate subordinate person X, है ना?
उसके साथ आपने एक खास तरीके से काम करना, you have developed a way of, and that person gets transferred and someone else comes. This person is quite different, है ना? Now, if you keep on working with this new person in the same way which you are working with that old person, it's not going to go anywhere. मैं मतलब आप अपने आपके साथ ये हुआ होगा, है ना? होता है ना? मैंने इसलिए मिसाल दी. तो adaptability means being able to see कि अच्छा वो social awareness का भी हिस्सा आ जाता है इसके साथ, है ना? तो आप देखते हैं कि अच्छा यार ये बंदे की ये इसकी तो तबीयत कुछ और है, and so then you adapt, you change your behavior and the way you जिस assumptions पे आप वो पिछले आदमी के साथ काम कर रहे थे, वो assumptions you realize कि यार they are not going to work. So अभी आप ये कहना उस दूसरे को कहना कि आप वैसे ही हो जाओ जैसे आप कहते होगे, नॉर्मल तरीका यही होता है. We trying to change the others works very very little. दूसरे को चेंज करना is actually an impossibility, it's a delusion. वो होता नहीं है. दूसरा तब चेंज होगा जब आप चेंज होना शुरू हो जाओ ना. When you start changing, then the other will also start changing. So ये तो मैं as a my whatever 45 years of experience or whatever के, and ये emotional intelligence की बुनियाद, ये जो आपने सवाल पूछा ना, is a fundamental issue. Emotional intelligence का यही है, यही realize करना कि you are the principal actor. तो तब्दीली या change या shift या leadership या जो भी आपने provide करनी है वो आपसे आनी है. And once you start recognizing that, तो आप में change भी आएगी, आप में improvement भी आएगी, you know, you will learn from your mistakes and so on and so forth. And then that has a huge ripple effect on everyone. आपके जो subordinates हैं, आपके superiors हैं, सब पे असर होता है उसका, है ना? तो मतलब है कि ये ऐसा इशू है कि जिसमें you have to focus on your own centrality, कि आपकी at an emotional level कि वो कितनी important है. ठीक है? Achievement drive is the drive to always be making an effort to improve. Not for again वो उसके जो दुनियावी अजर या वो मिलते रहेंगे, लेकिन it's an attitudinal shift कि जी मैं जो काम कर रही हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मैं बेहतरी कैसे ला सकता हूँ, है ना? And constantly looking, है ना? ऐसे लोग हैं, I mean hopefully once one starts on this path, you question the status quo, you are a change agent, आप change agent बनना शुरू हो जाते हैं. लेकिन that's not the motivation. The motivation has to be simply कि यार look, I'm doing this job, this is good enough, इसमें मुझे मेरी तरक्कियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, लेकिन वो ड्राइव अगर हो, अभी वो आपको किसी गोली में नहीं मिलेगी. I mean there is no pill to instill that drive, है ना? लेकिन in case that starts emerging in you कि यार whatever I am doing, मैं इस लेवल पे हूँ तो मैं इस लेवल पे जाना चाहता हूँ, मैं इस लेवल पे हूँ तो मैं इस लेवल पे जाना चाहता हूँ. It doesn't matter where you are, but you are constantly striving to get better, to improve. ठीक है ना? That makes a huge difference. That starts making a huge difference in everyone. इसलिए कि औरों की भी motivation में फर्क आना शुरू हो जाता है. People who are working with you, people who are working under you, है ना? वो ये जो सारा हम excellence वगैरह की बातें करते रहते हैं ना, it all comes from this achievement drive कि you are always looking to
as they say, वो कहावतन push the envelope. इस achievement drive में के साथ एक aligned सी चीज़ है जो बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान में, but if that kind of, is this whole issue of optimism. Optimism self confidence के साथ भी related है, लेकिन achievement drive के साथ भी related है. Optimism is in the belief, the deep down belief that yes, I can improve. अगर आपके दिल में ये आ जाए ना कि मैं कुछ भी करती रहूं या मैं कुछ भी करता रहूं, होना वाला तो कुछ नहीं है. I'm not changing, I'm talking of changing the world. Leave that. That is an unimportant issue. I'm talking of changing yourself. तो optimism ये होता है कि जी, yes, I am hopeful or I believe that I can improve. मतलब एक ये बिलीफ आ जाए कि हाँ मैं एक्चुअली इंप्रूव कर सकता हूँ, है ना. ऑप्टिमिज्म कैन बी लर्न्ड ऑल्सो. और ऑप्टिमिज्म में ये भी होता है कि वंस यू आर ऑप्टिमिस्टिक, जब डिफिकल्टीज आती है ना सामने, when problems arise which are big problems, unfavorable circumstances होते हैं, but if you are optimistic, so then you feel and then you also develop ways of how to deal with that unfavorable situation, है ना. out of the box thinking possible हो जाती है. मैं तो ऑब्जर्वर हूँ ना दुनिया का. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ना, I don't mean to go into, लेकिन एक मैंने इंटरेस्टिंग, मैं 10 साल बाहर रहा, 2-1 साल हुए वापस आया हूँ, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मैंने देखा है, probably in your age group but more so in the younger people, there is far more optimism in Pakistan today than there was 10 years ago. Now what the reasons are for that? And I think one of the things which Imran Khan, without realizing it, is capitalizing on is connecting with that optimism. वो कर क्या रहा है? उसे लोग वोट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो ईमानदार है ये वो छोड़ दो उस बातें को. लेकिन what he is doing is कि वो younger लोगों की optimism कि things can get better and you can make them better and I will help you make them better. That is underlying जो सारी चीज है ना कि चीजों को बेहतर करना है. And that is something which if कई moments आएंगे, कई दिन आएंगे जब आपकी optimism, आप depress होंगे, when your optimism is down, but that is okay. ऐसे कोई perfectly एक तरीके से तो नहीं चलता रहता, लेकिन ground आपकी अगर optimism की बरकरार रहे या develop हो जाए कि where you feel कि यार ठीक है, मसले भी होते हैं, ये भी होता है, लेकिन मैं इसको deal कर पाऊंगा, मैं इसके साथ deal करूंगा, जो भी करना है, let me just do it. So that helps a lot. ये जो इम्प्रूवमेंट का जो इशू है ना अचीवमेंट ड्राइव के साथ, उसका खासा लिंक है. आखिरी पॉइंट इस सेल्फ मैनेजमेंट का है, द होल इशू ऑफ इनिशिएटिव. Initiative simply, I mean, if I try to put it more simply, is to act before you are forced to act. है ना? Before you are forced to act. Now again I'll appeal to each one of you. Look at your bench and the personnel there.
And if you start thinking open-mindedly, how can you make it more efficient? For example, from a management point of view. Sir, I am a civil servant and I'm very impressed by him. What he did was that he got certain amount of cases, issues have legal, statutory issues have. And so he didn't stop there. He passed the orders on it. And the best part is, he just wrote a letter to that department to legislate on that issue. Exactly. And he sent me a copy and I was amazed. I said, no, that's That is initiative. Excellent. वाह क्या अच्छी की बात की मेरी बात समझ रहे हैं ना. Now if you open your mind, आपको बहुत सारी चीजें नजर आती होंगी कि यार ये कानून में खराबी है, you know, या ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है इसमें क्या खराबी है, you know. I don't know ABC of what you have to deal with. लेकिन initiative would mean कि you write to, you communicate with. मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसलिए करें कि मैं कह रहा हूँ, no. I'm not saying that. What I'm saying is कि a person with this initiative in him or her would then try to remedy that. उस चीज को ठीक करने का, इसलिए नहीं कि किसी ने उसे कहा है, इसलिए कि उसे खुद देखा है कि यार ये इस चीज में ये खराबी है ना. And I tell you, you will be amazed at what it seems very like यार मेरे कहने से या मेरे करने से क्या होगा. You know, I know this is an attitude which all of us have. We feel sort of helpless. हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती हैं कि यार ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, but we feel helpless. We feel कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. What I'm saying is कि hopefully if some of you partially start feeling a little differently, कि अच्छा नहीं, let me see what I can actually do. So then you will find out, okay, कि मैं शायद उसको लेटर लिख दूं या उसको टेलीफोन कर दूं या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठ के इसको डिस्कस कर लूं कि ये अच्छा ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ऐसे कैसे, so on and so forth. So then things start improving. And only when people, असल में I keep on digressing लेकिन I can't help it. हमारा असल में मसला ये होता है कि we keep on passing the buck. मुझे ये लगता है कि जी ये तो मतलब फाइनली मैं यहाँ बैठा हूँ, ये तो डीजी का इशू है और इनके मसले हैं, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इनको मतलब आई हैव टू जस्ट, मैंने 3 घंटे ही गुजारने हैं ना, तो 3 घंटे मैं किसी तरीके से भी गुजार सकता हूँ. लेकिन ये तो खैर ज़रा भोंडी सी मिसाल है. हमारा यही होता है कि वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग कि जी ये फलां लोग ठीक काम नहीं कर रहे और ये हमारे नीचे लोग. All of us are busy doing that. Everyone is blaming the other. By and large. I mean, there are always exceptions. मेरा point ये है कि वो other, they are probably they deserve the blame. ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो blame नहीं कर, लेकिन that is not going to help anything. आप 1000 दफा blame करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. What will make a difference is if you sit down कि अच्छा यार वो जो कर रहा है मेरे ऊपर बैठा है उसे करने दो, जो मेरे नीचे बैठा है उसे करने दो. What is it that I can do? What is it that I can do which will make this better? There are some things which you can do. There are some things in which you may have to connect with some others to do that. So that is really, and that makes a huge difference in the efficiency and the environment of a workplace. उसके बगैर कोई भी काम जो है ना मतलब इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग उसके बगैर नहीं होती. हाँ जी, enough of that. यार if I sound like I'm sermonizing, तो I apologize for that already. लेकिन सच्ची बात यह है कि
मैंने भी इसी सोसाइटी में ज़िंदगी, bulk of my career has been here, although I've worked as the Fakhar Zaman was saying, I've worked in the US and England and Canada. लेकिन मेरा bulk of my working life has been in Pakistan, and I've worked in government institutions. I was in the civil service. मैं पुलिस में था, उससे मैंने रिज़ाइन किया. फिर मैं पिशावर यूनिवर्सिटी में था, and so on and so forth. And what I found is that all of us keep on lamenting कि हालात बहुत बुरे हैं, है ना? हम सब लोग ये शिकायत करते हैं कि हालात बुरे हैं, जो हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, वो हैं. What is it that I can do to make them better? In a limited way. I shouldn't be looking to change the world. That is not going to happen. मेरी अपनी छोटी सी जो डोमेन है, उसमें मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ? That's all. And it's not a difficult task. All of you are more than capable of doing it. आप अगर इस लाइन पे सोचना शुरू कर दें ना, you will discover so much. And don't expect to be perfectly right all the time. You will make changes, and some of them may be terrible. But be open to that. कि ठीक है यार, keep on. And consultation is a very important thing. कि जो भी कर रहे हैं उसमें जो भी stakeholders involved हैं उनसे consult करते हुए उसको आगे ले जाने की कोशिश करें. स्टम्बल करेंगे, फेल होंगे, कभी आप पार्शली सक्सीड होंगे, कभी ज़्यादा सक्सीड होंगे, लेकिन it will make life much more interesting for you. You will feel more alive. You will feel more in control. मैं साइकोलॉजिकल बातें कर रहा हूँ. ये हेल्पलेसनेस की फीलिंग जो है ना, ये बहुत ख़राब फीलिंग है. ये इनिशिएटिव को बिल्कुल मार देती है, लेकिन उससे आपको कोई नहीं निकालेगा. आप ही नहीं निकालना है. Only you can do it. है ना? So that is all. Let's go to now the social awareness. हैं? किस वक्त तक टाइम है हमारा? बस? नहीं 12:30 तक है यार. हैं? हाँ, good. I can bore you for longer. Social awareness. Here is a word which I still am understanding. I really feel. I don't think there is possibility of perfect understanding. The word is empathy. It sounds like sympathy. Huh? Sympathy, but it's totally different. Sympathy तो ये होती है कि आप किसी के साथ जब पुरसा वर्सा करने जाते हो ना, तो sympathize कर रहे होते ना, है ना, कि ओ सॉरी या तरस खाने वाली बात. Sympathy has a little bit of तरस. Empathy has nothing to do with that. I'll first utter some words and then try to convey their real meaning. Empathy is the ability to be aware of the other's emotions. Emotions, concerns, and needs. Now, I can't get into your head or into your heart to know what you're feeling or what you're concerned about or what you need. मैं आपके अंदर तो नहीं घुस सकता. But how do I do it? How do I become aware of the other's feelings, others' concerns, and so on and so forth?
मुश्किल काम है? लेकिन बुनियाद, it is based on, now this is sort of a chicken and egg sort of situation here. The more aware you are of your own feelings, the better you will become at becoming aware of others' feelings. Okay? Now let me lay it out first. The more aware you are of your own feelings. अच्छा, ये सिंपल लगता है लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है. अपनी फीलिंग्स से अवेयर होना. अच्छा, तो the more you develop the competence of self-awareness, the more your competence of social awareness will get better. Acha, let's say you have reached a certain baseline level of self-awareness. As your self-awareness improves, your social awareness will improve also. लेकिन pragmatically यानी practically होता ये है, each of you do it, all of you do it, but you don't know you're doing it. When we are interacting with someone, we are developing a sense of what they are feeling from the tone of voice which they are using, from the language which they are using, from most of it non-verbal stuff. अगर एक बंदा आपसे बात कर रहा है और आप वो हर 2 मिनट बाद ऐसे ऐसे करता है, है ना? Now you don't have to be an expert in non-verbal. It's called non-verbal communication. It's not only necessarily with body, it's also the kind of clothes the other person is wearing, what is his grooming, you know. बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी बुनियाद पे आप डेवलप करते हो, एक पिक्चर डेवलप करते हो उसकी इमोशंस की. ठीक है? Now all of us do it to some degree or the other. But as I said, as you become more and more skilled at becoming aware of your own feelings, you will become more and more skilled at understanding what the other person may be feeling or he or she may be feeling. ठीक है? लेकिन this part is difficult but not so difficult. The second part, which is a necessary component of empathy, is the more difficult part. कि आप सेंस कर रहे हो कि यार ये बंदा तो मतलब इस वक्त गुस्से में है, या इस वक्त ये बंदा या बंदी एंग्शियस है, या this person is really looking somehow to harm me. आप ये सेंस डेवलप करते हो. The difficult part is what we talked about earlier. To not be pulled by what you sense he or she is feeling. हम पुल हो जाते हैं. वो अगर गुस्से में है तो without realizing it, our own anger starts getting triggered. Now you've lost empathy. Empathy है कि you become aware of the other person's feeling without getting pulled into it. And you are bound to get pulled if you start judging that feeling. कि यार ये तो कितना बुरा आदमी है, देखो ये गुस्से से भरा हुआ है, ये कितना बुरा आदमी वाला इशू जब तक रहेगा ना, 2 things will happen. You will get pulled in.
And it is not empathy. Empathy really, I mean, it's a very difficult thing. मैं 36-37 साल से clinical practice कर रहा हूँ. And the foundation of clinical, as a clinical psychologist, foundation of practice of clinical psychology is empathy. And I genuinely feel that I many times stumble there. इसलिए कि तो empathy है बड़ा मुश्किल, doesn't mean one has to become perfectly empathic. That's an impossibility, जैसे मैंने शुरू में कहा. लेकिन increasing your empathic skills, let's put it that way. To what extent it is God-given? God-given, so I don't use those terms. लेकिन some people have that skill. Some people, उनकी परवरिश या जो भी वजह है, from whatever reason, yes, there are differences. There are differences, there is no doubt. There are huge differences. लेकिन जिस level पे भी आप हैं, उससे आगे जाना possible है. That's all. लेकिन basic level तो अगर मतलब हम without realizing it, we don't practice it too much. We are very reactive. मतलब हम react करते रहते हैं. हम दूसरे की feeling, दूसरा जैसे behave कर रहा है ना, तो most of the time we are sort of reacting. If we step back a little bit, psychologically step back a little bit and try to see कि यार वो बंदा what the hell is going on with that person. उनकी feelings को जरा हम recognize करना शुरू कर देना, and then don't get pulled in. Then you will not react even. अगर आप step back कर सको ना, तो empathy develop होनी शुरू हो जाती है. So what I am saying is कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई rocket science नहीं है, और ना ये ऐसी चीज़ है कि इसमें perfection possible है. You know, everyone is empathic to a certain level, and everyone can improve. Not leverage. I mean, आम ज़बान में understanding the other person, but it's not understanding. It's not understanding of the normal sense. It's understanding the other person's feelings. आम ज़बान में sensitive, being sensitive to the other. एहसास, अगले का एहसास रखना. Are being understanding to the other that she is going through that emotion, but there is not another time that you're pulled into it. आप पुल ना हो, अगर पुल हो गए तो एम्पैथी खत्म हो जाती है. हाँ. You are understanding, but you're also getting into it. हाँ. तो as I said, this is it's a जैसे नफ्सियात में बहुत सारी चीजें हैं, जरा वो इतनी black and white नहीं होती ना, and there are sort of lots of grays in there, और मुश्किल है. This is a difficult thing, but we all do it. मतलब जो हमारे करीबी दोस्त होते हैं ना, you know, why do we feel so comfortable? Because we feel कि यार मैं मुझ पे जो गुजर रही है ना अंदर है ना, तो this person knows what I'm going through. That's our closest friends. हमारे closest friends कौन होते हैं? जो हमारे साथ empathize कर रहे होते हैं, है ना? और आप भी उनके साथ empathize कर रहे होंगे, इसलिए कि otherwise they wouldn't be your friends. What I'm saying is that one needs to start recognizing the importance of empathy at the workplace also. मतलब इंसानों के साथ ही काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी empathy बहुत useful होती है. And especially for people who are sort of in the leadership, management sort of positions, the way you conduct yourself, the way you behave, the level of your emotional competence will have far-reaching effects, not only on yourself, on others. ठीक है? कहाँ गई? एक दो और चीजें उनमें मैं ज्यादा नहीं जाता. This is enough. एक और है which may be a little useful to you. It's not purely psychology, but it's sort of an awareness of
the organizational culture. है ना? आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस कोड में, हर इस वक्त there is a temporary culture which has emerged here. I don't want to say label it good, bad, ugly, beautiful, it doesn't matter. But there is a culture which has emerged here, which will stay for about, and where has that culture come from? It has come from you and me. है ना? It's unstated, it's not measurable, but there is a certain, क्या कहते हैं, ambience जिसे कहते हैं, हाँ, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है ना? तो social awareness for people of at your level would include an awareness of the organizational culture. उसमें networks क्या क्या हैं, है ना? उसमें मतलब है कि who actually is wielding influence and stuff like that. मतलब I don't want to go into too much detail of this. This is, I think, I expect everyone is sort of with me on that. कि अच्छा हो क्या रहा है, लेकिन आप अगर उसमें पार्टी बन गए ना किसी ग्रुप के साथ या किसी चीज का, then you're lost. मेरी बात समझे? You have to learn in a sense. इसमें मेरा ख्याल है, this is not Goldman or anyone else, मेरा अपना ये ख्याल है कि सबसे बड़ा मुश्किल जो होती है हमारी इमोशनल लेवल पे, कि most of the time we either get pulled in or we are disengaged. है ना? And what I'm saying is that an emotionally intelligent person, globally as a whole, has learned, and many of you already are there, and this can be improved upon, have learned to remain engaged without being pulled in. ठीक है ना? मतलब है, you remain engaged without being pulled in. तो जिसे objectivity कहते हैं फिर, then objectivity becomes possible. आपको नजर भी आ रहा है, लेकिन आप pull in नहीं हो रहे, तो आपको clearly नजर आएगा. I don't want to go too further down this line. It's a complicated matter. लेकिन organizational awareness is also a competence which one can develop, where you start understanding the culture of the place and so on and so forth. Then there is this whole set of what is called a relationship management. Developing others. Do I need to say anything more about this? No, वो तो जरूरी है, लेकिन for you as a leader, इसलिए कि एक लेवल पे तो आप लीडर्स हैं ना, अपनी कोर्ट्स के तो आप you are heading those courts. Helping or facilitating people who are working, I don't like the word, but who are working under you, so to say, helping them develop
मुझे ऐसी हंसी आती है, ये पाकिस्तान का कल्चर तो ऐसे है कि यूजुअली द लीडर, ऑफ कोर्स नन ऑफ यू डू दिस, बट मैंने जब नई नई पेशावर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की 83 में, आई हैड कम फ्रॉम द यूएस, तो आई सून रियलाइज्ड कि my head of the department didn't like me because he was threatened by me. अच्छा, now this is the reverse. पाकिस्तान में रिवर्स होता है. हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे नीचे जो है ना उनको और भी जरा खुडे लाइन लगाए हम, है ना? Of course that is horrible for the institution, and it's horrible for you. You don't realize it. The reverse is कि जी अच्छा, let me help these people develop, let me strengthen them. उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या aspirations हैं, let me see how I can help. It's amazing, although it seems कि ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, how much growth happens not only in them but the one who is helping. अगर मैं किसी को help कर रहा हूँ develop करने में, मेरी उससे कहीं ज़्यादा growth हो रही है, emotionally and performance wise. Both those things are true. मतलब एक तो पर्सनल है, दूसरी परफॉर्मेंस का इशू है, दोनों चीज़ें इंप्रूव होती हैं. तो डेवलप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में डेवलपिंग अदर्स इज एन एक्सट्रीमली important, especially for people in leadership positions. Such leaders are the ones who actually people accept as leaders. कुछ तो ये होता है ना कि ये जज साहब है, चाहे वो कितने भी वो मजबूरी है उनकी, वो जी सलाम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन genuinely where people come to you कि जी मुझे इस चीज़ में काम की ज़रूरत है या इसमें मदद की ज़रूरत है, where they feel that yes they can come to you and they are sure that you will help them if they need to. तो उससे बहुत बेहतरी आ जाती है चीज़ें. फिर इशू है इन्फ्लुएंस का है. Now this is a competence इनको अल्फाज में इन चीज़ों को बताना बहुत मुश्किल है. इन्फ्लुएंस मतलब है कि ये आप परसुएसिव होते हैं, है ना, उसके पीछे भी बहुत सारी इश्यूज हैं. You are persuasive, you can persuade people, you can convince, जैसे आम ज़बान में convince. और ये तभी कर सकते हैं जब आप दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस से अवेयर रहें, उसको हैंडल कर सकें, उनको मैनेज कर सकें, है ना. अगला अगर गुस्से में आता है आपसे, आपके पास ना, इधर आप उसे बिल्कुल दरवाजे बंद कर देते हैं या उसको गुस्सा होते हैं वापस. तीसरी ये है कि अच्छा you learn how to, you understand what is going on and then you learn how to manage that anger. अभी वो उसकी मैं specifics नहीं बता सकता इसलिए कि every situation is so different from everything else, but someone who can manage the other person's feelings and handle them will have much greater influence and will be accepted more as a leader. I'm sorry, किस चीज़ के साथ? जी. बिल्कुल, देखें वो सारी इमोशनल चीज़ें हैं. अगर मैं तो नफ्सियात की बात कर रहा हूँ ना, ये रहम का मतलब अगर आप, मैं इस्लाम के बारे में अनफॉर्चुनेटली I mean I know the rituals but I don't know Islam really. Because that's a very difficult process. लेकिन मैं तो होली प्रॉफिट की लाइफ को देखता हूँ ना, तो I mean उस पे मेरे कमेंट करना भी मुझे ऐसी अजीब सी बेहूदगी लगती है. लेकिन
I think he was incredibly, कैसे कहूँ मतलब, लेकिन इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो आर्टिकुलेट एक और तरीके से हुई हैं, लेकिन यू आर राइट, यस, these things are connected to many of the things, ये रहम, forgiveness, मुझे नहीं समझ आई, I don't understand the question. It's not a competition. देखें भाई, कोई कंपटीशन नहीं है कि जी ये बेहतर है कि वो बेहतर है. मुझे देखिए, मैं तो इतना सा स्टूडेंट हूँ, मैं तो थोड़े सा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर सकता हूँ. आपने इतना बड़ा टोकरा मेरे सामने रख दिया, उसके बारे में मुझे क्या पता है? हाउ कैन आई कंपेयर एंड कंट्रास्ट? नहीं कर सकता ना मैं आई मीन आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर करेज, लेकिन आई कांट डेयर इवन स्टार्ट कंपेयरिंग दिस विद दैट. मैं नहीं कर सकता. तो आप कर सकते हैं, करें जरूर, ठीक है जी. नाउ comes the third area of relationship management is communication. इसमें सबसे जो मेरा ख्याल है क्रिटिकल चीज है is the ability to listen. ठीक है ना? और तो लिसनिंग इज आपकी लिसनिंग एबिलिटी जितनी बेहतर होगी तो आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज भी बेहतर होती जाएंगी उसके साथ. लेकिन कम्युनिकेशन is not only the communication of information. Communication may, we may not realize it, but the more important part of the communication is what we are sharing at the emotional level. क्या मतलब है? I'm trying to think of a sort of an example. Gee, if you can give an example, that would be great. बोलें. Yes, yes. So listening is, yes, one of the important factors, but I would say something more than that. In the art of presentation, how you can present what is your objective. जी, लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूँ. You've touched it from a different angle. मेरा point ये है कि uttering words is not necessarily communication. मतलब है जब आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हो और दूसरा बंदा रिसीव कर रहा, दूसरा कंप्यूटर रिसीव कर रहा होता है उसे,
So I'm sure you won't say that my computer is communicating with that computer. Of course not. Although information is going from one to the other. Information is being exchanged. Lekin I'm sure all of you will agree that no, but this is not communication. So what's the difference? Difference is that actually when we are interacting, so there is some information being shared, but that information, more importantly, there is an emotional ground to that information. है ना? वो मैं मिसाल देता हूँ कि आप पुलिस थाने में आपको कोई पकड़ के ले, आपको तो नहीं, मतलब किसी गरीब गुरबा को आपको नहीं पकड़ेगा कोई मेरे जैसे को कोई पकड़ के ले गया, पुलिस थाने वाला कहता है बैठे, और मैं जाता हूँ अपने दोस्त के घर और वो मेरा दोस्त मुझे कहता है बैठे, exactly the same information. Eh? The information is exactly the same. But something else is being communicated in both those. Do you see the difference? There is a certain relationship being communicated. The policeman is telling me that you are under my control and you better sit down. That is what is being communicated. अच्छा, वो इजहार उसका लहजे से होता है, इजहार उसे, लेकिन कम्युनिकेशन क्या हो रही? तो ये कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस की जब बात होती है, उसका यही है कि when you are communicating, you should be aware of the emotions or the command sort of in which that information is being shared. ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखें, आप अपने सबऑर्डिनेट्स से वही चीज मुख्तलिफ तरीकों से उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हो, है ना? I will not go into details. Now, if you are rude and abrupt, it will have certain consequences. Maybe very good, I don't know. On the other hand, you treat them as a human being who happens to be your peer. Now, the information content will be the same, but the emotional stuff which is being shared is what is and that is where the competence issue emerges. कि जब आप औरों के साथ interact करते हो, how that relationship develops, how it emerges, depends on your skill at how you communicate your emotions and your feelings with the other. बात समझे? ये extremely important चीज़ है. मेरा one of my makulas, मैं ये अपने कि the relationships, whether it's with your subordinates or with your husband or your wife or your children or your friends, or relationships are the most important thing in life. And relationships are the most damn difficult thing in life. Both these things are true. ये relationship management का जो हिस्सा है ना, जिस पे अभी बात हो रही है, ये extremely important है. Not only in your workplace, but it's really important. It can be important in other ways. तो communication उसका एक central हिस्सा है. Influence है, developing others है, ये तो workplace के हवाले से है. It doesn't have to be workplace. It can be. जी. I think listening is
I'm sorry? Listening is having no nexus with the communication. These are opposite terms. How we can communicate by listening? Listening is something else. When you communicate by your gestures, by your words, by your acts, you communicate. No, I'm sorry. I don't want to go into a lecture of on communication. लेकिन ये बहुत पुराना तरीका है कि there is a sender and there is a receiver, है ना? ये communication का एक theory जो एक बहुत पुरानी फरजूदा totally rejected now. Okay? Communication is actually, think of it in terms of a loop. It's a loop. Acha. I will never talk to a wall. Why not? Well, unless I'm crazy. Why don't I talk to a wall? Because there is no listener. So when I'm talking, the listener is equally important as equally important as myself. अच्छा आपने ये बात कर दी. This is really it's an important issue. देखिए आप जब बात कर रहे होते हो आप इससे तो you are not insensitive to how it is affecting me. आप insensitive तो नहीं होते ना. आप जब कोई बात कर रहे होते हो मुझसे, मैं listen कर रहा हूँ, I am just listening, ठीक है ना. लेकिन आप बात इस तरीके से करोगे कि I shouldn't get offended और information भी जाए मुझे, और आप जो मेरी तरफ फील करें वो भी थोड़ा सा उसमें गैर दानिस्ता तौर पे उसमें मिक्स होके आ रहा है, ठीक है ना. Now, although I am a listener, but the both of us are communicating. I may not be verbalizing anything to you, back to you, but that verbalization is not communication. आप इसको straight line में ऐसे ना सोचें, इसको loop में सोचें, है ना. और वो loop टूट जाता है when there is no listener. There is no communication possible if there is no listener. है ना. Listener means even a reader. When you are typing a letter to someone, है ना, you are communicating. वहाँ listener भी नहीं है, लेकिन you have someone in mind. Those 3,000 people who are going to read that notification of yours. है ना. So without those 3,000 readers, you can't communicate. मेरी बात समझ. I'm trying to make it very simplistic. लेकिन ये communication का जो issue है, ये this is a whole. There are courses and things on communication theory. उसके बहुत सारे aspects हैं. और psychological side से मैंने थोड़ा बहुत इस पे थोड़ी बहुत I used to teach this a little bit. So let's come down to ये तो theoretical academic type की बातें हो रही थी. Let's come down to concrete things. Communicating openly with the others and being aware of your own feelings. Now this thing will keep on repeating itself, and the other's feelings will help both you and the other while you are communicating. I mean it's impossible. आप पता नहीं 20-25 जितने भी लोग हैं, I can't. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. आपने सब लोगों ने बहुत तालीम की हुई, बहुत सारे आपके लेक्चरर होंगे जिनका कोई आई कांटेक्ट नहीं होता था आपके साथ. Bring those teachers to mind. They may be giving you all the Evidence Act or whatever CRPC या जो भी वो पढ़ा रहे हैं, वो उतना ही perfectly दें. और एक और टीचर है जो he or she is sort of making eye contact and
seeing you nod or drowse, go to sleep, or whatever any one of you is doing. Now, do you feel that there was any difference in what you learned in the first one and in the second one? वो क्या फर्क है? वो जो आपके साथ आई कांट कर रहा है, या मैं जो मेरी तो आदत सी ऐसी है, I shouldn't call it a कोशिश. When I am present, like psychologically present when I am talking to you, it has a different effect. जब मैं अपने और मसलों का सोच रहा हूँ, या मेरे कोई there's something else going on in my mind and I'm uttering words and just spewing things at you, it will have a different effect. मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि whenever you are communicating with someone, try to be present. Just all. मतलब मैं इसको simply put करूँ. Doesn't matter किसके साथ बात कर रहे हैं. It's not possible to be present all the time with all the people because demands of life are such. लेकिन हर एक के साथ कभी कभी प्रेजेंट हो जाया करें. अभी ये इसको चाहे आप किसी हवाले से देखिए when you're working with human beings, you have to keep in mind that at some level you and I, each one of you, we are at the same place in our basic humanness. I know all of you probably are much better in knowing the law and so on and so forth, and probably most of you are even much better in terms of income or whatever. लेकिन एक हवाले से तो मतलब है, तो वो चीज कभी कभी recognize करना through while you are communicating, interacting with someone, it helps a lot. It helps a lot in terms of management, how things function, how performance occurs, and so on and so forth. So relationship management का सबसे important ये है, in a sense, you have to be open. You have to be open to others with others. That doesn't mean you compromise on what needs to be done. नहीं, ये मैं नहीं कह रहा. लेकिन emotionally present रहे. फिर conflict management का issue है. This is, I don't want to go into that. I just want to touch on two quick things. We have 10 more minutes. Leadership. लीडरशिप भी एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक इज अ कॉम्पिटेंस यू कैन डेवलप. वो क्या कहते हैं, पैदाइशी लीडर. वो पैदाइशी लीडर की ऐसी गप्पे हैं, अफसानों की बातें हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे मैंने कहा था ना कि ये कॉम्पिटेंसीज इंटरलिंक्ड है. सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में है सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है ना, उसमें फिर ये अचीवमेंट ड्राइव और ये चीज़ें सारी वो सेल्फ मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं. वो जो मैंने आपको एक कागज़ दिया उसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-6 लिस्टेड हैं. सो यू कैन लुक एट देम. ऑफ कोर्स आई कैन ओनली सॉर्ट ऑफ सजेस्ट कि आप इसको ऑनलाइन इस पे जो चीज़ें विज़ें हैं, it will help you a lot. Leadership का यही है कि I mean one of the things which is the ability to inspire others to work towards common goals and to motivate people to get enthusiastic. As a role model, exactly, वो simple role model, लेकिन अपनी actions से ज़्यादा leading by example. Once you ये leadership competence जितनी ज़्यादा होगी, इतना आप change catalyst बनते जाएंगे. वो जो earlier मैं बात कर रहा था ना, making things better. Then you lead people to make things better.
और इसके साथ एक बहुत प्रॉब्लम जो मुझे पाकिस्तान में बहुत नजर आती है इज द डिफिकल्टी ऑफ पीपल टू वर्क इन टीम्स. टीम वर्क हमारे लोगों के लिए पता है क्यों मुश्किल है. हम हर आदमी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ है. जी आई डोंट नो द नेगेटिव, लेकिन आपके लिए तो मेरा यही है कि इफ यू अगर एक ग्रुप साथ काम कर रहा है, अगर वो अपनी फीलिंग्स नॉट नेसेसरी इन कैथारसिस, लेकिन अगर फीलिंग्स ऑफ एंड ऑन थोड़ी सी शेयर करनी शुरू कर देना तो the chances of the team developing and being able to work together improves. So it's sharing of feelings which is the basis of teamwork. हर चीज को मैं नफ्सियात की शक्ल में अल्लाह अभी ये और बहुत सारी चीजें हैं. मैं क्विकली I'll try to speed it up. कुछ एवरीडे लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करने की टिप्स हैं. ये जो है ना अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स, ये तो बुनियादी है. तो ये आप अपने जहन में, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही होता है. व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन सेल्फ, ऐसी चीजें सोचे कि मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है, नॉट योर एकेडमिक स्ट्रेंथ. इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है, मेरी इमोशनल वीकनेसेस क्या है, और मेरा मूड मेरे थिंकिंग या बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है. These are questions which you can ask yourself. पॉज बटन दबाया करें. वो क्या कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो. It's a very useful thing. It's a very useful thing. Yes. Criticism, try to benefit from it. इसमें मैं ज्यादा नहीं जा सकता. नहीं, even if it is वो आप हेल्दी या अनहेल्दी आप बनाते हैं. I can't go into लेकिन नेगेटिव फीडबैक किसी को भी अच्छी नहीं लगती. नेगेटिव फीडबैक no one likes. लेकिन if you remain open to कि maybe I can learn something from this, maybe, है ना, most of the time you may not learn anything from it, but at least you don't reject it outright. यूं ही कोई क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, हम इमोशनली अमूमन बस बंद हो जाते हैं कि यार ये तो गलत आदमी है. Don't do that, because most of the time it may be criticism for the sake of criticism, but sometimes there may be things which are actually helpful. Empathy, हाँ एक इशू है जो मैंने यहाँ और ये वेस्टर्न कल्चर्स में बड़ा क्लियर फर्क देखा. यहाँ हमारी कोशिश होती है, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द अदर्स वीकनेसेस, है ना, एंड देन वी कीप ऑन ट्राइंग टू टेल देम कि ये इसको ठीक करो, ऐसे करो. अच्छा, दिस हैज ह्यूज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. इसी के बच्चों के साथ भी हम ऐसे करते हैं. द रिवर्स इज टू स्टार्ट विद स्ट्रेंथ्स. अगले में अच्छी कौन सी बातें हैं, वो सारा का सारा तो भैड़ा नहीं हो सकता ना. कोई चीजें तो अच्छी होंगी.
है ना? Start from that. And then you can slowly say कि जी हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा है. लेकिन देखो अगर इसमें ये ऐसे कर लेते ना, makes a huge psychological difference. It makes a huge psychological difference. Again, I'll appeal to your own experiences. तो फिर जो अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ करना भी बहुत अच्छी बात है. Praising someone else, someone's good thing, appreciating someone's good thing. Try to inculcate that. है ना? आपको खुद कैसे अच्छा लगेगा जब आपको कोई कुछ कहता है कि जी ये तो काम आपने बहुत अच्छा किया. I really liked it. It makes you feel good. उसके आपकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ती, है ना? Next time जब आप काम करने जाएं तो when you're feeling good like that, you'll perform better. है ना? एक दफा से कुछ चीज नहीं होती, लेकिन if you start utilizing these things ना कि अगले की तारीफ करना, उसकी strength से शुरू करना, doesn't mean कि you never touch their weaknesses. लेकिन don't start with the weaknesses and keep on just talking about the weaknesses, which is what happens in Pakistan. Weaknesses and mistakes is what we focus on. आपने weakness या mistake देखी, well and good, but try to come to it after saying, appreciating कि जी ये जो आपने काम किया था बड़ा अच्छा था, लेकिन इसको भी देख लेना, वगैरह वगैरह. Don't be afraid to apologize. गलती हो गई, it's okay. बस बाकी तो छोटी छोटी चीज है. लेकिन एक बस फाइनल चीज मैं ये कहूँगा, एंड देन आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस क्वेश्चन, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी from being manipulated by that highly emotionally intelligent scam artist. ये बहुत important है, but that can only happen if you are aware. देखिए बुनियादी बात ये है, self-awareness is the key. And there is no limit to it. बस आपकी सारी इमोशनल कॉम्पिटेंसीज की बुनियाद वहां से शुरू होगी, और ये कहीं नहीं है कि मैं पहुंच गया हूं या मैं पहुंच गई हूं. There is always room for getting better. अच्छा, एक मैंने खुद तो नहीं लिया, I must confess, लेकिन I was looking for some. There's this quick emotional intelligence self-assessment. वो कहाँ गया? It's time for me to